important component of health emergency management. Ladies and gentlemen, India has institutionalized One Health at the national, state, and district levels, and we need to promote huge amount of collaboration. We are the only country which is working with WHO, FAO, WAH, and UNEP, and we've received huge support and enthusiasm for all this. They are in sync with our thoughts on digital surveillance, which encompasses climate data, human health data, and animal health data. Ladies and gentlemen, with the onset of the triple planetary crisis, climate change, biodiversity loss, and pollution, the inextricably linked infectious disease threats emerge, which not only put our health systems under a lot of pressure, but also one of the major global health challenges. There is therefore a need to streamline international policy and build resilient health systems. Hence, it is important to connect One Health to the challenge of climate change and its impact on human health. As climate change has worsened several health risks such as water and food-borne diseases, vector-borne and rodent-borne diseases, we need to impact the social determinants of health they are all impacting the social determinants of health by causing shortage of food, water, and loss of livelihood. Today's launch of this animal health security will strengthen the pandemic preparedness and response project, and this is a very crucial element of India's national health security framework and reflects India's proactive measure to mitigate the risk of future pandemic through a very comprehensive and integrated approach. I take this opportunity of congratulating the distinguished ministers and the ministry for launching this very unique initiative for animal health security in India, and I wish them all the best and all success. All the G20 countries will collaborate with the Ministry of Animal Husbandry to ensure its success on ground. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for your insightful views on the interconnectedness of human, animal, and environmental health and towards prioritizing One Health, your suggestions and recommendations. Ladies and gentlemen, we now bring you the message. It's a video message of Dr. Emmanuel Soberan, the Director General, World Organization for Animal Health. If you can play the video. Alex, I thank you for giving me the opportunity to say a few words today. First, I want to congratulate you on the launch of this project, which marks a major milestone for India in pandemic prevention and preparedness, as well as highlighting the critical link between animal and human health. As you know, improving animal health contributes to food security, boosts economy, promotes safe trade, protects public health, preserves wildlife and biodiversity, and help mitigate climate change. And we know that for safe, sustainable, and strong production, we need strong veterinary services. While the World Organization for Animal Health is not an implementing entity for the Pandemic Fund, we stand ready to support this initiative as a partner. WAR offers to its members a comprehensive suite of tools to assist them developing their veterinary services, and these projects lay a strong foundation for capacity building by addressing key findings from India 2018 PVS pathway evaluation done by WAR. It is a recognition for our work, and I would like to emphasize WAR's possible commitment to the project 4K objectives. First, enhancing surveillance system. The core focus is to establish robust surveillance, particularly for antimicrobial resistance. Through WAR's animal system, we will support India in collecting and reporting data on antimicrobial usage, enhancing AMR surveillance and integrating with global systems like WAR's World Animal Health Information System. Second, upgrading laboratory infrastructure and laboratory capabilities is vital for better diagnostics and surveillance.
WOA is prepared to offer technical support through training projects to enhance laboratory capacity, enabling India to respond effectively to outbreaks and create important networks with other laboratories. Third, a well-trained workforce is essential for effective veterinary service delivery. Our competencies and curriculum guidelines for veterinary professionals, paraprofessionals, and community animal health workers will align with the project's goal of enhancing the workforce skill through a One Health approach. Lastly, improving institutional capacity to support One Health operationalization will ensuring a comprehensive response to health challenges at the animal-human-environment interface. The quadripartite tool can support India in enhancing their One Health mechanism. WOA is committed to support India through the PVS pathway and other tools that assess and sustain the capacities of veterinary services. Our efforts will ensure that the gains made under this project are measured not only by improvement in PVS scores, but also by better outcomes in the joint external evaluation. In conclusion, I wish you good luck. WOA will be proud to partner in this ambitious project. By working collaboratively, we can protect livelihood, secure food safety, and respond effectively to emerging health threats. Because animal health is our health. It's everyone's health. Thank you. So thank you to Dr. Soviran for being partners with us towards ensuring good animal health. And now, ladies and gentlemen, inviting a distinguished figure whose contribution to public health and to policies have been instrumental in shaping India's response to global health challenges. As a member of NITI Aayog, he has been a driving force in guiding national healthcare strategies and reforms, ensuring the country's preparedness for future challenges. He, ladies and gentlemen, was part of the core team of the Union government for COVID-19 pandemic response. I
leadership of our political leaders. I like to bring to your kind attention three important initiatives which contextualize the work that you are embarking upon. Firstly, the nation has launched National One Health Mission under the leadership of the Prime Minister. Number two, NITI has come out with an important forward-looking report on pandemic preparedness. And I'll touch upon these two in a little more detail very quickly. But the third initiative, just for mention, is that India would launch the National Action Plan for Antimicrobial Resistance 2.0, taking us to 2028-29 very soon, and that work has also been done. In all these areas, we are all connected. The sectors, animal, wildlife, domestic, human, all sectors are coming together to play the rightful role. Let me first touch upon the National One Health Mission. The National One Health Mission brings together at least 11 union departments and ministries for the first time for a major national endeavor, barring perhaps the COVID-19 pandemic. It brings together the private sector, the industry, and the state governments. And what it aims to do is four things. Pandemic preparedness for humans and animals. Number two, to bring about integrated surveillance. And the team out here has played a very important role in crafting all this. I'm just showcasing their work. So most important, perhaps the most important pillar, integrated surveillance across wildlife, livestock, and humans is the second mandate. Strengthening routine preventive measures and preparing communities and other players in preventing, averting, and controlling, and minimizing and mitigating the outbreaks. And the fourth element is joint outbreak investigation. Around this will be efforts for targeted R&D, sharing of data, streamlining of our regulatory processes for countermeasures such as diagnostics, therapeutics, and vaccines, and also, of course, overarching governance mechanism. That's the way India has crafted its National One Health Mission, which is unique. We are supported in this with the pronouncements of G20 leadership, the pronouncements of the Honorable Prime Minister, who says, one Earth, one health. We are guided by the philosophy of working together for the national cause, as we saw. I'm happy to inform you that in that regard, the work is already rolling out. A creation of a One Health Institute in Nagpur has been commissioned, and the work is going on. Pashu Aadhaar will be used very effectively for this work to track the virus, should that happen, among animals. Census will go, the census that we are going to start now will go in a significant way in that direction. Joint outbreaks for recent Nipah outbreak were undertaken. So it's not just saying, but we're also doing it. Similarly, at slaughterhouses, specialized surveillances are now being instituted. At the interface of wild animals and humans, special measures are being done. The BSL-4 labs, currently we have only one in the entire nation, and that stood the test of time from the NIV Pune, and it gave us a whole lot of information for COVID virus and so on. We'll be moving towards creating 3 other BSL-4 labs. I'm also happy to inform you that under the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission, the PMA BHIM, a major strengthening of human health, public health system is being rolled out impressively. More than 3,300 block-level public health units, integrated public health units, centers at all district hospitals. In each district, or typically at a district hospital. Moving from one national center for disease control to 4 additional regional centers of disease control. We are also having metropolitan surveillance units. We are strengthening and adding public health units at airports, seaports,
and land crossing to the tune of 50 such units, and so on. I'm also happy to inform you, in showing up that we can work together, very recently, a mock drill was conducted in real time in Rajasthan, in one of the districts, where a mock outbreak was created and a joint investigation was carried out. This was called Vishanu Yudh Abhiyan, which is virus war drill. Virus war drill has been instituted. So from the conceptual framework of One Health, which we heard from our leaders and the scientists and our own community, we have moved to a system, and now we are moving toward action in that regard. What we are doing today is so very critical and so important as a part of that effort. The second information and development that I would like to share with you, the launch of a report from my organization, Niti Aayog, Amitabh Kantji's organization, Niti Aayog, which is Future Pandemic Preparedness and Emergency Response, which is a report of an expert group that Niti had constituted, led by ex-Secretary Renu Swarupji, Dr. Soumya Swaminathan, and Dr. Sujit and my team. So this gives us blueprint of moving forward with preparedness based on the lessons of COVID-19 pandemic, based on the developments and knowledge paradigm emanating globally, and based on our own groundings and One Health mission. Bringing it all together, it is a framework, it's available in public domain, which looks at how our preparedness should go, which indeed connects, as I said, fundamentally, the One Health paradigm, animal health, livestock health, wildlife, animal, and environment, and human health. It has 4 buckets. I will not touch upon each one of them. It's governance. Number 2, surveillance and data. Third is research, innovation, and countermeasure development. And the fourth is partnership. Let me just touch upon the ones that are relevant very, very briefly. Firstly, in the space of surveillance, one of the relative gap that we identified was our ability to make robust modeling and forecasting for an ongoing or a future pandemic. We would very much like to strengthen this area, and some efforts at IISc, Bangalore, and others are being done. I would urge our team here for forecasting of the origin of zoonotic pathogens should also be embraced. It is intended here, but I'm mentioning it here that will be the work that we will all do together, not just in the human space forecasting, but also forecasting dynamics in animal space may be very different. Wildlife, it may be very different. We would like to work in that direction because India has to be ready for that. The second major area for countermeasures include diagnostics, vaccines, and therapeutics. They apply to animals as much as they apply to humans.
and 850 million poultry stock is at a high risk of emerging zoonotic and animal diseases. This project represents a transformative step in safeguarding both animal and human health. The One Health approach adopted in this project will significantly enhance the capacity to prevent, detect, and respond to emerging zoonotic pathogens, thereby protecting not only public health, but also the livelihoods of vulnerable communities, which is very critical. As a lead implementing entity with an allocation of $12 million, the Asian Development Bank is pleased to be actively coordinating with the Department of Animal Husbandry and Dairying, the World Bank, and the Food and Agriculture Organization on this very important project. The ADB commits to expeditiously implementing activities to augment animal health laboratory systems and vaccine manufacturing facilities, enhance surveillance and early warning systems, build human resource capacity and competency, which is very critical, strengthen data systems, and address cross-cutting institutional capacity gaps at national and regional levels. These activities are designed to improve the overall preparedness of India's health systems in managing zoonotic diseases. ADB has already mobilized its technical resources and consultants, and we have conducted animal health laboratory needs and quality assessments for 7 laboratories across India under this project. On behalf of the Asian Development Bank, I extend my very best wishes for the successful implementation of this initiative and reiterate ADB's unwavering commitment to technical assistance and financing to support India in its efforts to strengthen animal health security and pandemic preparedness response. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you to ADB. They stand as an important entity towards the implementation of the pandemic fund. और देवी सज्जनों, आज के इस अवसर पर डिपार्टमेंट द्वारा 3 डॉक्यूमेंट्स का भी विमोचन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्रीगण से निवेदन करती हूं कि आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का यहां पर विमोचन करें। सबसे पहले सेंसस मैनुअल एंड ब्रीड रेकनर। Ladies and gentlemen, we have 3 important documents today which are going to be released at the hands of our honorable ministers. If you can, please. Census manual and breed reckoner. This is the first document which is being released. I request all the dignitaries on the dais to please join in the release. ये दोनों मैन्यूल्स फील्ड अधिकारियों, विशेष रूप से गणनाकारों, सुपरवाइजर्स, जिला अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। गणना संचालन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान और कई अन्य दुविधाओं के बारे में क्षेत्र में ये मैन्यूल्स मार्गदर्शन करते हैं। Ladies and gentlemen, they stand as Bible in the field while collecting data. And we now have the release of the crisis management plan for livestock diseases. पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विकसित पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना को एक रणनीतिक ढांचे के रूप में विकसित किया गया है, जो बीमारी के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। जैव सुरक्षा, टीकाकरण और बेहतर समन्वय पर ध्यान केंद्रित करके योजना का उद्देश्य प्रकोप के प्रभाव को कम करना और हमारी पशुधन आबादी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य हमारे पशुधन क्षेत्र की रेजिलियंस को मजबूत करना है और ये सुनिश्चित करना है कि रोग संकट को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए rapid response mechanisms मौजूद हैं। And now I request the honorable ministers to kindly release the standard veterinary treatment guideline. These guidelines provide latest approaches of treatment for various livestock and poultry diseases, wherein quality drugs of proven efficacy which provide scale of economy in the treatment have been enlisted. The SVTG is developed by a group of about 80 expert veterinarians, clinicians having enormous field experience.
Standard treatment guidelines have been synthesized for almost all diseases of livestock and poultry common in the country. An important clinical diagnostic criteria, including differential diagnosis for all the selected diseases, are listed in the SVTG. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अब हम अपने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्रीगण के विचारों और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करती हूं आदरणीय श्री जॉर्ज कुरियन जी को, हमारे माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री जी को। Honorable Minister Sri Rajiv Ranjan Singh, Sri Professor S.P. Singh Baghel, MOS Fisheries and Animal Husbandry, Dr. V.K. Paul, Member Niti Aayog, Sri Amitabh Kant, G20 Sherpa, Alka Upadhyay ji, Secretary, Dr. Abhijit Mitra, Sarita Chauhan, Jagat Hasirika, Dr. Benson, Dr. Hajiwada, Dr. Hikupi, dignitaries, sisters and brothers. As we avail the G20 Pandemic Fund, first I want to go to the theme of G20 Summit. Amitabh Kanji is there. And that was one world, one family. That is Vasudhaiva Kudumbakam. That's Vasudhaiva Kudumbakam is the thinking of India. For that, our Prime Minister, Modi ji, is trying. Vasudhaiva Kudumbakam is human being, animals, and the nature. We go together. No separation is there. These boundaries are the creation of the human mind. For animals and birds, no boundary is there. Continuously they travel. At the same time, the pandemic also. And the virus also. It happens. Then how can we prevent it? The only way is Indian school of thought. An integrated way of approach. We don't think that it is a human being and it is animal and it is plants and it is this nature. That we learned from the COVID pandemic. That time there was no border at all. And we were together, we were fighting, and we are thinking about the nature and the human being. That is why this, as I travel all over India, people ask about this African swine flu and avian influenza. Our guests are here. I asked about them about this African swine flu and avian influenza. I found that each and every country it is there. I asked about America. I asked about Philippines. I asked about Japan. It is there. And about vaccine is there. What is recurrence? It is there. What is the reason? That is where there come this Vasudhaiva Kudumbakam. That balancing should be there. That is what our
dynamic leadership of our cabinet minister, Rajiv Ranjan Singh. In India, we are going ahead. We are fighting. And we are progressing. And I want to say that this support of these organizations, FAO, Hajiwara is there from Japan. Yes, we remember Hukuako, that natural farming, it is our farming and your farming also. We respect that. Hukuako, it is natural farming. And the same way we were practicing in India also. And the Asian Development Bank, Mr. Benson is there. He is from Philippines. He is, Mr. Benson is here. He is from the Philippines, and he was also sharing the same thing. And our World Bank representative is there. Hikupi, sorry, she is from Namibia. And I was asking her about these things, is phenomenon. All over India, all over the world it is there. Then this cross-border cooperation is needed to prevent this one, and for this pandemic, this control, preparedness, etc. it is needed. And about this livestock census, now we say data is new oil to show our progress and put down others also. Data is the new oil. And for that, this census is essential. It is 21st edition of this census, this livestock census. And this support from all section is needed. Only this governments cannot do that. Farmers, veterinarians, researchers, international partners, we have to fight, we have to stand, and we have to think that this Vasudhaiva Kutumbakam, one world and one family. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister, sir, for inspiring everyone to be working towards one health in the very spirit of one earth, one family, and one future for all of us. Vasudhaiva Kutumbakam, which India has always taken pride in, and also on the importance of data, the collation of data, which will help us in formulating policies and programs. And now I request Professor S.P. Singh Baghel, sir, our Honorable Minister of State for Animal Husbandry and Tailoring, to please address the congregation. बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के इस मंच पर मंचासीन श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पंचायती राज, श्री जॉर्ज कुरियन साहब, राज्य मंत्री, डॉक्टर वी.के. पॉल साहब, मेंबर हेल्थ, नीति आयोग, श्री अमिताभ कांत जी, G20 शेरपा, जिन्होंने G20 के आयोजन को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया था, मिसेज अलका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, श्री जगत हजारका जी, एडवाइजर स्टैटिक्स, डॉक्टर एडुर्डो पी बेंजॉन, डायरेक्टर हेल्थ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डॉक्टर टाक्यूकी, FAO representative in India, Dr. Hikupi, senior agriculture economist, the World Bank, Mrs. Sarita Chauhan, joint secretary, stakeholders, secretaries and directors of the state animal husbandry departments, international organization, FAO, World Bank, ADB, WHO, UNDP, UNEP, WH, BMSF,
vice chancellors and deans of the different veterinary colleges, veterinary universities, director of Institute of ICR, officers of VCI, NDDB, AWBI, AQCS, representative of NCDC, FSI, APENDA, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, देवियों एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज का दिन विश्व स्वास्थ्य एवं मानवता ही नहीं, प्राणी मात्र के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाला दिन है। भावनाओं से अकेले काम नहीं चलता है, उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है। और आज अच्छी भावनाओं के साथ एक बड़े फंड के साथ G20 ने जो पेंडेमिक फंड बनाया है उसके रिलीज का भी दिन है और पशुओं की जनगणना के विषय में भी आज ये सेमिनार आयोजित की जा रही है। टेक्निकल सेशन में निश्चित तौर से विचार विमर्श होगा, वैचारिक समुद्र मंथन होगा और उससे कुछ ना कुछ ऐसा अमृत जरूर निकलेगा जो प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि भारत कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने देश के बारे तक सीमित सोच नहीं रखता है। मैं अपने विदेशी साथियों से कहना चाहूंगा कि संस्कृत में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। May all the happy, may all the free from disease, may all see auspicious days, may no one suffer in any way. सब लोग सुखी हों, सब निरोगी हों, सब लोग शुभ देखें, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। मुझे लगता है आज का दिन इसी के लिए है। और यहां तक भी विश्वास नहीं है, ये भारत में हो रहा है, लेकिन वी बिलीव अवर फिलॉसफी इज अयम निजा परो वेति गणना लोक चेतराम उदार चरितनाम तो वसुंधैव कुटुंबक। हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे जो विदेश के, कि दिस इज माइन दैट इज योर्स, सच कैलकुलेशंस आर द नैरो माइंडेड, फॉर द मैग्नीनियस द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो आज एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली को हम चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। यद्यपि मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा, वन नेशन वन ग्रिड पूरा हो चुका है, वन नेशन वन राशन कार्ड संपन्न हो चुका है, वन नेशन वन आयुष्मान कार्ड या वन नेशन वन हेल्थ, लेकिन आज का दिन वन वर्ल्ड वन हेल्थ का है। इसके लिए मैं इसमें साक्षी हुआ हूँ, शरीक हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। संयोग है कि उत्तर प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री का कैबिनेट मंत्री होने के नाते, बड़ा सूबा होने के नाते कुछ विभाग को समझने का मौका मिला। उसके बाद पिछली सरकार में, भारत सरकार में डॉक्टर पॉल के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देखना पड़ा, तो ह्यूमन डिजीज के बारे में थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है। और अब एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी में रहने के कारण तो जितनी भी योनियां हैं 33 करोड़, तो जब मैं ह्यूमन में था तो केवल ह्यूमन वाला था मिनिस्टर। वेटनरी में आने के कारण रेप्टाइल्स के भी हैं हम लोग, इंसेक्ट्स के भी हैं, फिशरीज के भी हैं, तो जितने प्राणी मात्र है तो पूरा सर्कल पूरा हो गया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री और एनिमल हस्बेंड्री के रूप में सबके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचने का और कुछ काम करने का मौका मिला। भारतीय किसानों की खेती के साथ समानांतर अर्थव्यवस्था पशुपालन है। आज से 5400 साल पहले जब द्वापर था तब भी पशुपालन होता था, वो अच्छी किस्म का, अच्छी नस्ल का पशुपालन होता था।
त्रेता भी 1,08,000 साल पुराना है। उस समय भी एनिमल्स का वर्णन है। हमारे यहाँ तो घोड़े का नाम भी उच्छेसरवा रखा गया। समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, उच्छेसरवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, पारिजात का फूल निकला। इसका मतलब हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाओं में वो सब है जिसके लिए आज हम बैठे हैं। 73% लोग अगर पशुपालन से जुड़े हुए हैं और सकल घरेलू उत्पाद 5.5% है, तो खतरे भी उतने ही 73% हैं। लगभग संक्रामक पशुओं से होने वाले रोग भी 75% हैं। शेष बची हुई बीमारियां दूषित पानी से भी होती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके पे कि जल जीवन मिशन, घर में नल, नल में जल और जल भी ट्रीटेड वाटर, तो मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग का बजट कम हो जाएगा। और आज का दिन ये लैब से अगर लैंड तक पहुंच गया तो निश्चित तौर से भविष्य में होने वाले पशुओं से संक्रामक रोग जो मनुष्यों में आते हैं उसमें भी रोक आएगी। मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा अपना अंदाज है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, 2 विश्व युद्धों में और द्विपक्षीय युद्धों में आज़ादी के बाद जितने लोग मारे गए हैं, मुझे लगता है कि पेंडेमिक में उससे ज़्यादा जनहानि हुई है। मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका पेंडेमिक में नीरस व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो इस मामले में फिर संभावित खतरे, जो ऐसे ही किसी एनिमल से कोई वायरस आए, उसके लिए पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी बीमारी के लिए काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इंसान बीमार होता है तो 5-10 सेकंड में महसूस करने लगता है और अपनी बीमारी का वर्णन डॉक्टर से कर पाता है। पशु बीमार होता है तो महसूस करता है लेकिन अपना वर्णन नहीं कर पाता है और लक्षण कुछ दिन बाद दिखाई पड़ते हैं, तब तक देरी बहुत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मुझे लंबी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज़ादी के बाद अगर सभी सरकारों में मिला के अगर एक राजनीतिक छात्र होने के नाते मेरे से पूछा जाए कि नंबर 1 काम क्या हुआ है, मेरे अपने विचार हैं। मैं प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड जो है, मैं उसको नंबर 1 दूंगा। आंकड़े बता रहे हैं कि 35.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। रोहित जी बैठे, इनका भी बड़ा योगदान है। वीके पॉल साहब के साथ बहुत रात दिन काम किया है। 30,000 अस्पताल इनपेनल्ड हैं। 9 करोड़ लोग अस्पताल में एडमिट होकर के इलाज करा चुके हैं। ये बाहर से नहीं होता इलाज। और लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए इनपेनल्ड अस्पतालों के खाते में जा चुका है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल खाते हों, 12,000 का शौचालय लेते हों, 1,000 की विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा करते हों, 12 करोड़ लोग सोचते हैं कि कब प्रधानमंत्री जी बटन दबाएं और 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि उनके खाते में आए, और जब वो बाजार में होते हैं, मोबाइल में खाते में आता है तो लौटते हुए 1 किलो जलेबी भी घर लेके जाते हैं। वो अगर धोखे में इन 5 सितारा अस्पतालों में घुस गए तो जमीन भी बिक जाएगी, जेवर भी बिक जाएंगे और कर्जा हो जाएगा। पैसे के आधार पर शिक्षा और चिकित्सा नहीं होनी चाहिए, मेरे अपने निजी विचार हैं। ये जो मैंने लंबे आंकड़े दिए हैं, 80 करोड़ गेहूं चावल खाने वाले, 12,000 का शौचालय, 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास लेने वाले लोग, ये 10 करोड़ से ऊपर ही सारी संख्या है। ये बीमार होने पर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स,
मैंने सुना है भाड़ में जाए कोर्स, हम पे तो 40 रुपए हैं, इसमें जितनी दवाई आती हो। तब वो नीली पीली गोली बिना रैपर के कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी की इस योजना से इलाज के अभाव में कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ दिनों में अगर 70 साल से ऊपर वालों का आयुष्मान कार्ड हो जाएगा तो 70 वाला वही होता है कि जैसे 70 की मॉडल की कार अगर हम वर्कशॉप ले जाते हैं तो 4 चीज़ें और निकल के आती हैं। 70 से ऊपर का व्यक्ति कोई एक टेस्ट कराने जाता है तो बोनस में 3-4 और लेके आता है बीमारियां। तो इसको जिस दिन ये 70 वाला हो जाएगा, पॉल साहब को पता होगा, वो तो करेंगे निश्चित तौर से, क्योंकि घोषणा पत्र में था, वो दिन भी बहुत अच्छा दिन होगा। मैं केवल ये चाहता हूँ राज्य सरकारों से कि यदि पशु बीमार होता है तो एक तो उसको ले जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, दूसरा वजन के अनुसार सॉल्ट होता है। तो ये तो राज्य सरकारों को पूर्णतः निःशुल्क इलाज करना चाहिए एनिमल्स का, और वो अगर हो जाएगा तो दूध बढ़ जाएगा, मांस बढ़ जाएगा। ये जनगणना पशु गणना जो होने जा रही है, इससे पॉल साहब से पैसे लेना आसान हो जाएगा। उसको दिखाना पड़ेगा हमको, उसके अनुसार डॉक्टरों की पोस्टिंग होगी, उसके अनुसार अस्पताल खुलेंगे, उसके अनुसार मेडिसिन, उसके अनुसार FMD की वैक्सीन, बाकी वैक्सीन्स। तो ये पशु गणना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए लोगों से केवल यही कहना है कि जब पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं चुनाव वाले दिन, तो 2-4 लोग मिलते हैं कि हमारा वोट नहीं है, जबकि वो BLO से मिल सकते हैं, वो मतदान केंद्र पे जा सकते हैं, वो टीचर को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल तो नहीं कहेगा कि आओ और मुझे गिन लो। इसलिए इसमें हमें थोड़ी संवेदनशीलता का परिचय देना है, जिससे उनका भी हक उनकी वेलफेयर स्कीम के लिए न मारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं इस सेमिनार की सफलता की कामना करता हूं, और निश्चित तौर से टेक्निकल सेशन के वैचारिक मंथन से ना केवल इंसान, ना केवल एनिमल्स, बल्कि प्राणी मात्र के लिए कुछ न कुछ अमृत निकलेगा, जो मानवता के साथ साथ और सभी जीव जंतु 33 करोड़ कोटि प्राणी मात्र हैं, उनके बहबूदी के लिए होगा। मैं इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते हमारे जो विदेशी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भारत की इस राजनीतिक राजधानी में, मुगल और दिल्ली की साझा संस्कृति के शहर में, मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, sir, for inspiring everyone to be working towards the good health of all, irrespective of their social and economic status, and in fact, working towards the good health of all beings, and further enriching us with the richness of Indian wisdom, knowledge, principles which are so very deep-rooted in our culture, in our Sanskriti, which is all about oneness, a feeling of unity between self and all the entities, a feeling of unity between self and the universe. Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, we have the much awaited moment, the 2 launches. And as we launch, would like to mention that present in this August gathering, we have some 700 people in person. There are some 300 people who are joining us also virtually and going to be witnessing this launch along with us. तो सबसे पहले 21वां पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है और फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस गणना में पालतू जानवरों की 16 प्रजातियों की लगभग 219 नस्लों को शामिल किया गया है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए 1 लाख फील्ड अधिकारी कार्यरत होंगे।
25 जून 2024 को हमारे माननीय मंत्री जी श्री राजीव रंजन सिंह जी द्वारा मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया था, जो कि डेटा कलेक्ट करने में फील्ड में सहायक होगा. And towards that, the rigorous training program for the usage of the mobile app was also initiated on the same day, on the 25th of June. Would also like to mention and highlight here that this is for the first time that we have a dedicated logo for the livestock census. I would like to request the Honorable Minister to please launch the 21st Livestock Census operation. पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है. पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है. इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशु और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है. तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें. इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी. पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार. आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश. मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी. Now we have the second launch. माननीय मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, अब रिमोट का बटन दबाकर आप पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को लॉन्च करें. India's livestock sector is the backbone of rural livelihoods, nutrition and economic growth. As the world's largest milk producer and a key player in the egg and meat production, our nation has immense potential to expand its global market presence. The sector contributes to 30.23% of the agricultural gross value added and has achieved a compound annual growth rate of 12.99% since 2014 till 2023. Protecting and nurturing livestock is just as crucial. Animal health issues pose significant challenges. They hinder growth, limit export potential, and threaten public health and food security. 5 of the last 6 public health emergencies declared by the World Health Organization stemmed from diseases of animal origin. This underscores the urgency of adopting a One Health approach for comprehensive solutions. The Department of Animal Husbandry and Dairying secured competitive funding through the G20 Pandemic Fund. Out of 350 expressions of interest and 180 full proposals, India was among the 19 grants approved in the first funding round. This initiative will be a cornerstone in strengthening the animal health security and pandemic preparedness. The project will enhance disease surveillance, upgrade laboratory networks, and build integrated, interoperable data systems for early warning and risk assessment. Through collaboration with implementing entities, the Asian Development Bank, Food and Agriculture Organization, and the World Bank, India will strengthen animal health infrastructure and foster cross-border cooperation, bolstering our capacity to combat diseases that affect both animals and humans. The G20 Pandemic Fund is more than a financial resource. It's a platform for advocacy, collaboration, and action that enhances pandemic prevention, preparedness, and response. India is committed to building a safer, more resilient future for animals and humans. A future where the livestock sector not only feeds the nation but strengthens India's global standing. So many congratulations to all the stakeholders who are associated with these two initiatives. And ladies and gentlemen, before I request the Honorable Minister to address us all, would like to mention that all the
3 documents which were released, once again in the very spirit of One Health and protecting our environment. You can download these manuals and these documents by scanning the QR code which is on your desk. और अब मैं सभी की तरफ से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी को, श्री राजीव रंजन सिंह जी को, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन साहब, डॉक्टर वीके पॉल साहब जो नीति आयोग के सदस्य हैं, श्री अमिताभ कांत जी जो G20 शेरपा हैं, श्रीमती अलका उपाध्याय जी सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग, डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, श्रीमती सरिता चौहान जी जॉइंट सेक्रेटरी पशुपालन, डॉक्टर बैंजोन जी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर हैगीवारा जो FAO के प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर कड़चियोंगा जो विश्व बैंक के प्रतिनिधि हैं, और श्री जगत हजारिका जी जो एडवाइजर स्टैटिस्टिक्स हैं पशुपालन विभाग, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों और आज इस समारोह के साथ जुड़े हुए ऑनलाइन सभी साथीगण, माता और बहनों, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि इस पुनीत काम के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित होकर आपने अपने जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। 700 लोग यहाँ उपस्थित हैं और 230 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो लगभग आप जोड़ लीजिए तो 1000 लोग आज इस पुनीत कार्य के साथ जुड़े हैं। हम सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है और एक दस्तावेजों का जो विमोचन हुआ है, ये तीनों ही पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं और पशुधन को एक दूसरे के साथ संग्रहित करते हैं। अगर तीनों को जोड़ के आप अगर देखेंगे तो पशुधन के स्वास्थ्य की दिशा में, पशुधन के गणना की दिशा में, उनके नस्ल सुधार की दिशा में, उनके बीमारियों के इलाज के लिए दिशा निर्देश की दिशा में, सभी मामलों में एक दूसरे के साथ ये जुड़े हैं और एक दूसरे के सहायक हैं। तो इसलिए पशुधन के साथ जुड़े हुए ये तीनों कार्यक्रम जो आज यहाँ से प्रारंभ किए जा रहे हैं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले जो पशुधन संगणना किया जा रहा है, लाइव स्टॉक सेंसस किया जा रहा है। कई लोगों ने चर्चा की पैंडेमिक फंड की, और ज्यादातर वक्ताओं का जो थ्रस्ट था वो पैंडेमिक फंड पर था। मैं आपको एक बात जो पशुधन संगणना की भी बताना चाहता हूं, क्योंकि पशुधन के साथ ये सारे कार्यक्रम जुड़े हैं, चाहे पैंडेमिक फंड हो या आपके जो पुस्तकों का विमोचन हुआ, जो दिशा निर्देश जारी हुआ। अब पशुधन हमारे परिवार का अंग होता है। हमारे घर के आंगन में मुर्गियां कूदती हैं, मुर्गियां दौड़ती हैं। हमारे दरवाजे पर पशुधन हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ाता है, वो हमारा परिवार का अंग है।
और हम परिवार के अंग के रूप में उसके परिवार के तरह उसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वह हमको आजीविका भी प्रदान करता है। सोशल और इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से वह हमको वो सपोर्ट करता है, वो हमारा परिवार का सदस्य है। तो इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में हम अगर पशुधन को लेके चलें और उस कमिटमेंट के साथ कि वो हमारा परिवार का सदस्य है, जिससे हमारा परिवार में कोई बीमार पड़ता हो, हमारे परिवार में किसी को ऊपर कोई संकट आता है और हम सब उसके साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह पशुधन को हम अगर परिवार का अंग मान के उसके किसी संकट के साथ अपने आप को खड़ा रखेंगे तो ये बहुत पुनीत का काम होगा। आज हमारे देश में 536 मिलियन से अधिक पशुधन है। 851 मिलियन पोल्ट्री है और इसके साथ आज हम दुनिया का सबसे दूसरे स्थान पर पशुधन की संख्या में आज हम विश्व में हैं। तो ये हमारी जो पशुधन है, चाहे वो हमारे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सुअर हो और उसके साथ साथ पोल्ट्री है, ये हमारे संख्या को बढ़ाता है और आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। और ये संभव हुआ है, और ये संभव हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2014-15 से इसमें विकास की गति तेज हुई। 2014-15 से लेके 2021-22 तक 13.36% की चक्रवृद्धि, वार्षिक वृद्धि, हमारी चक्रवात के हिसाब से वार्षिक वृद्धि हमारे पशुधन का हुआ है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ। इस अवधि के दौरान, इस 14-15 से लेके 21-22 के बीच में जो हमारा जीवीए में पशुधन का योगदान 24.3% रहा है शुरू में 14-15 में, जो अब बढ़कर 30.19% हो गया है। ये हमारा ग्रोथ। तो इसलिए आज, और सबसे इसके अलावा जो पूरे नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का योगदान 5% योगदान है पूरे हमारे इकोनॉमिक में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 24.64% दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। 6% ग्लोबल विश्व का जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है, वो 6% है। हमारा जो एनुअल ग्रोथ है, हमारा जो एनुअल ग्रोथ है वो 6% है और पूरे दुनिया का एनुअल ग्रोथ 2% है। तो 6% कहां हम 3 गुना विश्व के का जो एनुअल ग्रोथ है उससे 3 गुना अधिक हमारा एनुअल ग्रोथ है मिल्क प्रोडक्शन में और डेयरी के क्षेत्र में। तो ये हमारा अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का है। इसलिए कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, अगर वो देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं, अगर वो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना करते हैं, तो उनका ध्यान हर सेक्टर पर जाता है, हर क्षेत्र पर जाता है। और 2019 में एक फैसला उन्होंने किया कि जो पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी को कृषि विभाग से अलग करके एक नया मंत्रालय बना और वहां से इसके ग्रोथ में, वृद्धि में उछाल आना शुरू हुआ। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस दूरदृष्टि का परिणाम था। तो इसलिए आज हमको इस क्षेत्र को अगर हमको फोकस्ड रखना है, तो जो पशुधन संगणना का कार्यक्रम आज शुरू किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अगर जिसकी गणना हम 5 साल में, सब लोगों ने बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हम इसका सेंसस, लाइव स्टॉक का सेंसस करते हैं और ये लाइव स्टॉक सेंसस का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम
हम जो नीति बनाते हैं पशुधन के हित में, चाहे वो हेल्थ उनके बीमारियों से जुड़ा हो, उनके नस्ल सुधार से जुड़ा हो, उनके हर चीज के साथ जुड़ा हो, उसमें हमारा ये का जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमको वो नीति बनाने में वो बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आज यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेंसस के माध्यम से हमको यह भी पता चलता है कि आबादी का रुझान किस तरफ जा रहा है, नस्ल की क्या संख्या है, और इसके साथ साथ हम हेल्थ का जो पशुधन के हेल्थ के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका स्टैटिस्टिक्स भी हमको पता चलता है। क्योंकि आज पशुधन के कारण हम विश्व में प्रथम स्थान पर हैं, लेकिन विश्व में प्रथम स्थान के पर रहने के बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारी कई समस्या है। हमारे देश में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के कारण हम अपने दूध उत्पादकों को विदेशों में निर्यात नहीं कर पा रहे, और इसको दूर करना हमारे लिए एक चुनौती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स अगर हमको इस सेंसस के माध्यम से मिलेगा तो हम उसके माध्यम से आगे नीति बनाने में प्रभावी होंगे। वन हेल्थ दृष्टिकोण भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सटीक डाटा अगर हमको मिलता है तो जेनेरिक रोग जो पशु से मनुष्य में आता है उसको रोकने में भी हमको ये सहायक होगा। तो इसलिए ये सारे जो काम है सेंसस के काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफएमडी के बारे में, पीपीआर के बारे में, ब्रुसेलोसिस के बारे में हमने आपको बताया। एनएडीसीपी एक कार्यक्रम चला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, और इसके तहत हम एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम एफएमडी और ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करें, और 2030 तक हम इसको भारत को एफएमडी और ब्रुसेलोसिस मुक्त देश बनाए। ये हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो इसमें आज बहुत बड़ा योगदान है। आज एफएमडी के लगभग 91 करोड़ एफएमडी के टीके लगाए जा चुके हैं। 24 राज्य हैं जिसमें एफएमडी चौथे राउंड का जो वैक्सीनेशन है वो चौथे राउंड में चला गया है, और 7 राज्यों में यह चौथे राउंड में चल रहा है। तो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ब्रुसेलोसिस की बात करें आप तो अब तक 4.23 करोड़ टीके ब्रुसेलोसिस के लगाए जा चुके हैं। तो ये काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये पूरा जो सेंसस का काम है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़े, और आज आपकी उपस्थिति यह कमिटमेंट दर्शाता है, आपकी प्रतिबद्धता को दोहराता है कि आप इस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और एक मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारे अभिजीत मित्रा जी यहां बैठे हुए हैं, हम इनको भी कहेंगे, बधाई देते हैं कि काश यदि जो लाइव स्टॉक सेंसस है, लाइव स्टॉक पशुधन के गणना के काम को पूरी ईमानदारी के साथ चलाएं, और उसका मॉनिटरिंग पूरे युद्ध स्तर पर उसका मॉनिटरिंग लगातार करें, ताकि सटीक डाटा हमको उपलब्ध हो सके, और उस सटीक डाटे के आधार पर हम आगे नीतियों का निर्धारण कर सके, और देश की अर्थव्यवस्था में हम इस सेक्टर को एक्सपोर्ट में ले जाके देश की अर्थव्यवस्था में यह विभाग भारी योगदान कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें हम योगदान कर सके, इस संकल्प के साथ आप सब ये चले। और अभिजीत मित्रा जी को हम विशेष तौर पर इसके लिए कहते हैं। इसके अलावा G20 के पेंडेमिक फंड की भी चर्चा हुई। यह $25 मिलियन का परियोजना है जिसका आज शुभारंभ किया गया है, और इसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक हेल्थ है उसकी सिक्योरिटी
और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में यह बहुत बड़ा योगदान है और इस काम को हम लोग इसके माध्यम से करेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। और आज आपका यहां जो उपस्थिति है वो इस कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत की वर्तमान योजना तो है ही, जो हम अपनी योजना चला रहे हैं, NADCP चला रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये G20 का पैंडेमिक फंड है, यह हमको रोग को निगरानी करने में, रोग की मॉनिटरिंग करने में, प्रयोगशाला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में और सीमा पार सहयोग देते हुए, पर जोर देते हुए डेटा प्रणाली को एकीकृत, यूनिफाइड करने में यह बहुत मददगार साबित होगा। यह सिर्फ महामारी रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जिम्मेदार, जो रिस्पॉन्सिबल पशुपालक को बढ़ावा देना, रिस्पॉन्सिबल लाइव स्टॉक के पालने वाले लोगों को बढ़ावा देना, किसानों को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य सुविधा को सुरक्षित करना और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये इसका काम है। तो इसलिए ये पैंडेमिक फंड भी और हमारा जो NADCP का कार्यक्रम चल रहा है, ये दोनों मिलके हम लोग पशुधन के क्षेत्र में सुदृढ़ कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी विमोचन आज हुआ है, उसका अनावरण किया गया, उसका विमोचन हुआ। यह दस्तावेज हमारे प्रयासों का, जो हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सेंसस के माध्यम से हो या हमारा जो पैंडेमिक फंड है, उस पूरे माध्यम को हमको मॉनिटरिंग करने में हमारे लिए गाइडलाइन है और दिशा निर्देश है, वो इसमें मार्गदर्शन करेगा। इसमें मानक उपचार का भी दिशा निर्देश है, इनके स्टैंडर्ड्स का दिशा निर्देश है और पशुधन के रोग के संकट की स्थिति में इसके मैनेजमेंट का भी गाइडलाइन है। पोल्ट्री रोग को भी प्राथमिकता और संगणना डेटा एकत्र करना है और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए, जो भी अधिकारी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मार्गदर्शित करने के लिए भी इस दस्तावेज में जो आज जारी किया गया है, इसमें भी उनके लिए गाइडलाइंस है। तो इसलिए, और सबसे बड़ा चीज है कि दो किताब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पशुधन संगणना मैनुअल 2024 और पशु नस्ल सुलभ संदर्भ उपलब्ध 2024, ये दोनों आपके लिए उपलब्ध हैं और ये दोनों आपको आने वाले समय में इस कार्यक्रम को चलाने में आपके लिए काफी मददगार होंगे। तो इसलिए आज के दिन इसको लॉन्च करते हुए हम सब इस संकल्प के साथ यहां से जाएं, इस कमिटमेंट के साथ हम लोग यहां से जाएं कि पूरे मन योग से जो पशुधन हमारे परिवार के सदस्य के रूप में है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके नस्ल सुधार के लिए, उनके बीमारी से मुक्ति में योगदान करने के लिए हम सब पूरे मनोयोग के साथ इसमें लगेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग यहां से जाएं और यही आग्रह और अपील आपसे करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Minister, sir, for sharing with us the thought behind and the very importance of the two initiatives which have been launched today. Once again, as you mentioned, inspired by the richness of our tradition and culture, where animals have always been considered as our family and where we call them as Pashudhan, our animal wealth. And it's further inspired by the pious, sensitive and very thoughtful leadership of our Honorable Prime Minister that India stands committed towards becoming a Viksit Bharat, taking everyone together. And ladies and gentlemen, as we conclude this important session, the inaugural session, इस कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं अब निवेदन करती हूँ श्री जगत हजारिका जी को, एडवाइजर स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, टू काइंडली प्रपोज अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स।
Good afternoon all. Honorable Chief Guest, Sri Rajiv Ranjan Singh sir, Honorable Minister of State, Professor S.P. Singh Baghel sir, Sri George Kurian sir, esteemed Secretary, distinguished guests, colleagues, media friends, and ladies and gentlemen. It is my great privilege to deliver the vote of thanks on this remarkable occasion, marking the launch of two critical initiatives, the Pandemic Fund Project, the 21st Livestock Census Operation. First, I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Minister Sri Rajiv Ranjan Singh sir for his gracious presence and inspiring address and unwavering leadership in guiding the animal husbandry and dairying sector. My thanks to our esteemed Minister of States, Professor S.P. Singh Baghel sir, and Sri George Kurian sir for their insightful words that have further underscored the importance of these initiatives. I would also like to acknowledge the valuable presence and in-depth insight of our distinguished guests, Sri Amitabh Kant sir and Professor V.K. Paul sir. Your valuable remarks on both the topics were inspiring and impactful. Sir, even your presence itself gives the event a significant height. We are really grateful to you. I also extend my vote of thanks to our significant leader, Secretary, Madam Alka Upadhyay, for her gracious presence and invaluable insight. We are really thankful to you, Madam. Our gratitude goes to Dr. Priya Basu, Dr. Emmanuel, Mr. Ramesh Subramaniam, who marked their presence virtually but impactfully by sharing global perspective and reinforcing our commitment to animal health security and pandemic preparedness. I also want to extend my warm gratitude to all other dignitaries, state officers, participants, media friends for their active participation to make the event successful. I also want to extend my extreme gratitude to our Commissioner Animal Husbandry, Dr. Abhijit Mitra sir, for his leading, planning, and implementing the event very meticulously. Finally, I would like to thank all the delegates, state representatives, and stakeholders for their participation. Your continued collaboration and commitment are essential for the success of the Pandemic Fund Project as well as the 21st Livestock Census. As we officially launch the 21st Livestock Census operation today, I am confident in its successful and comprehensive execution. I would also like to take this moment to acknowledge the tireless efforts of all our teams who work to bring this event successful. On behalf of the Department of Animal Husbandry and Dairying, thank you once again and wish you everyone a productive and successful day ahead. Thank you. Thank you very much, sir. And as we conclude the session, I would like to request our dignitaries to kindly step forward for a group photograph. We'll close with a group photograph, and ladies and gentlemen, as our leaders, our dignitaries join us here all together in one frame, please once again join us in expressing thanks to them. They are the people behind these two initiatives which have been launched today, leading us, guiding us, advising us as we all work together in this very approach, taking the approach of One Health, building a better world for all of us, for all beings on this earth, taking the vision and the mission of our Honorable Prime Minister. Thank you, Honorable Ministers. Thank you to all the dignitaries. Thank you to all of you also, ladies and gentlemen. With that, we close this session. We invite you to please join us for tea and coffee outside. It's going to be a half-an-hour tea and coffee break. Resuming with our sessions, the first panel discussion at 12:30. So it's going to be a quick tea and coffee. The first session on cross-sectoral connect under One Health lens for pandemic preparedness.
Journey so far, the preparations for 21st Livestock Census. The 21st Livestock Census is a pivotal initiative for India aimed at collecting transformative data for the livestock sector. Here are the key milestones on this remarkable journey. The first milestone was achieved when Technical Committee meeting on 9th of January 2024 was held.